आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम respected students, as you know well, earlier we have discussed two lectures of civil justice system of Pakistan that were related to the introduction of the civil justice system of Pakistan. Now today it is a third lecture. The name of this lecture is the stages of civil suit. In our initial lecture, we discussed basic fundamental concepts of civil justice system of Pakistan, in which we discussed the civil rights, the powers of the civil court regarding its jurisdiction, and the nature of the civil suits. Today we will earlier discuss the basic things that are related to the civil suit. First of all, you should know about the suit. What is a suit or case? Especially in reference to the civil procedure, a procedure that relates to the civil rights. Black's Law Dictionary defines the case. As you are seeing this slide, the definition of case has been given: a civil or criminal proceeding, action, suit or controversy at law or in equity. Now we also read the definition of suit: any proceeding by a party or parties against another in a court of law. In simple words, we may say that a case may be a civil case, and you must keep in mind right now, in reference to civil procedure, case means a civil case, action or suit wherein controversy at law is involved. Suit. What is a suit? Any proceeding by a party or parties against another. These are the basics of a case or suit. Now we see the stages of civil trial. You should be well aware about the scheme of the Code of Civil Procedure. Code of Civil Procedure is a code that is applicable throughout whole of the Pakistan. Generally, if a person files a civil suit before the civil court, the procedure, the way that will be adopted by the civil code is the Code of Civil Procedure. But by adopting this procedure, what steps should be taken by the civil code? These steps are in arrangement. First is the filing of case. Now you should think for a while at this stage. We must know an aggrieved person. We should be also aware from a person who has a right against a remedy. What is a right and remedy? Aggrieved person. A person whose civil right has been infringed by anyone is called an aggrieved person. What he has the remedy for the redressal of his grievance.
The system of Pakistan civil law system provides him remedy of filing of a case. The most important and the first step for an aggrieved person is the filing of case. When a case is filed, we will also discuss the different stages as well as the different sections and rules and orders of the Code of Civil Procedure. Initially, for the framing of suit, filing of suit, the Civil Procedure Code orders. Civil Procedure Code has been divided in two portions, has been classified in two portions. One is the section portion and the other is the order portion. Order portion explains the section portion. Order portion has been introduced by the Honorable High Court. Its sanction, its authority is also well given in the Code of Civil Procedure in its different sections. When a civil suit is filed, after that, court summons the defendant. You must know about two English words that are plaintiff and defendant. Plaintiff is a person who is aggrieved, whose right has been infringed by some person, and defendant is a person against whom a civil suit has been filed. After filing of the suit, after filing of the case, defendant is summoned by the civil court. What is a civil court? Its establishment. Civil court is a forum that has been created by the civil court's ordinance, wherein the powers has also been given and jurisdiction. Jurisdiction also defines the code of civil procedure. Both. When defendant is summoned, if he appears, he files the written statement. Now the legal situation changes. What happens if the defendant appears and does not appear? If the defendant does not appear, then an ex parte proceedings are initiated against the defendant. And if the defendant appears, what the procedure is adopted by the civil court? Defendant, after his appearance, files the written statement. When written statement is filed by the defendant, court frames the issues. After framing of issues, evidence is recorded by the court. But in arrangement, firstly, plaintiff is given the opportunity for the production and recording of his evidence. After the closing of evidence of the plaintiff, the opportunity is given to the defendant. When the defendant closes his evidence, then the case is fixed for final arguments. In the process of final arguments, both the learned counsels for the plaintiff and defendant, they argue the case, and after the final arguments, judgment is pronounced. When judgment is pronounced, in case of a civil suit, a decree sheet is prepared, that is called decree. These are the basic stages of the civil trial. The court adopts this procedure for the recording of evidence. The main object of the trial, including the civil as well as criminal, is the examination by the court. Examination of the evidence by the court. As earlier I have told you that a plaintiff has his
on cause of action. He has a claim against the defendant. But how claim is examined, how it is investigated. The procedure that has been given in the Code of Civil Procedure is the examination. Who are examined? These are the witnesses who depose before the court and produce their evidence. Their evidence is recorded. The court pronounced the judgment. The stages: first is the filing of case, and the last stage is the decree. These are the some basic concepts that you must know, because these are very necessary for a law student as well as for a lawyer or a person who has a interest in the civil justice system of पाकिस्तान. अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, प्लेंटिफ अमूमन सादा अल्फाज में जिसे हम मुद्दई कहते हैं. डिफेंडेंट वो शख्स है जिसके खिलाफ दावा दायर किया गया है. मुद्दई और मुद्दालय. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की एक बाकायदा बेहतरीन तरतीब है. जैसे मैं बता चुका हूँ, सेक्शन पोर्शन भी है और आर्डर पोर्शन भी है. जो आर्डर पोर्शन है वो एक्सप्लेन करता है सेक्शन पोर्शन को. ये एक प्रोसीजरल लॉ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो एक रास्ता तरीका बताता है कि एक एग्रीव्ड पर्सन है, एक वो शख्स जो समझता है कि उसका सिविल राइट किसी ने गस्ब कर लिया है या उसका कोई सिविल राइट कोई इंसान मानने से इनकारी है. उस इंसान में एक आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकता है. सपोज़ कोई कंपनी है या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी बाज़ औक़ात रेमेडी अवेल करनी होती है प्राइवेट पर्सनस को. अब ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की आप लोगों को एक तरतीब बता दी जिसमें ये स्टेज है सिविल ट्रायल की. अब इंशाल्लाह ताला इसको हम तरतीब से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें जो आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं. अब ये इंतहाई अहम चीज़ कि हमें पहले जानना पड़ेगा कि प्लेंट क्या है. प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिफ के बिहाफ पर तैयार किया जाता है. ये लिस्ट ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. प्लेंट को, जिसे अर्जी दावा कहते हैं, जनरली वकील साहब तहरीर करते हैं. इसके साथ वो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात लगाते हैं. ये फिर अदालत में प्लेंट दायर की जाती है. जो अदालत का, हमारा पाकिस्तान का, पार्टिकुलरली व्हेन द अमेंडमेंट was made in the Code of Civil Procedure, and these amendments were enforced in 2020 in the month of November. The basic civil structure of civil courts was changed by these amendments. Now there are two civil courts. One is the administrative and the other is the trial. इसको इंशाल्लाह ताला हम वक्त के साथ बाद में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोड क्या करती है और ट्रायल कोड क्या करती है. उससे पहले हम प्लेंट को देख लेते हैं. अब ये केस ला है आप लोगों के सामने 2013 CLD 2005 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. अब ये केस लाज के ब्रीफ फैक्ट्स बताना ज़रूरी नहीं है इस स्टेज पर. इसमें सिर्फ आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, बल्कि ये आप लोग नोट कर लें. जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप लिख लें. उसके बाद अगर मुनासिब हो तो ये आप लोग अपना एक टेस्ट समझें. उसके बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूँगा. अब ये क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं. व्हाट इज़ अ प्लेंट, हाउ इट इज़ फाइल्ड, और इसे रेलिवेंट आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ अ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट, क्योंकि आज हमारा मौजू है प्लेंट. आर्डर 7 इसको डील करता है CPC का. बेसिकली
आर्डर 6 है जनरली जो प्लीडिंग को डील करता है। अब प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। जब इन दो चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो ये प्लीडिंग कहलाती हैं। अब प्लेंट का जैसे आप लोगों को बताया कि एग्रीव्ड पर्सन है जो ये समझता है कि उसका हक कोई शख्स नहीं दे रहा, तो वो सिविल कोर्ट में आ जाता है, प्लेंट दायर करता है। उसके बाद कोर्ट की ड्यूटी क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट, स्टैंडर्ड ऑफ प्लेंट। अब जिस तरह आप लोगों को प्लेंट का समझना ज़रूरी है, इसी तरह काज ऑफ एक्शन को भी समझना ज़रूरी है। अब काज ऑफ एक्शन क्या है? वजह, रीज़न, लॉजिक, द motivating force for an aggrieved person that brought him in the court of law। अब इसे आप सादा तरीके से समझ लीजिए। मिसाल दे रहे हैं, आपकी ज़मीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पर कोई शख्स कब्ज़ा कर लेता है। अब आपका सिविल राइट इन्फ्रिंज हो गया, आप डिप्राइव हो गए एक सिविल राइट से। दूसरी मिसाल है एग्रीमेंट टू सेल। फ़र्ज़ किया कि आप ज़मीन ख़रीदते हैं किसी शख्स से। ज़मीन है 2 कनाल या 4 कनाल, कुछ पैसे एडवांस दे दिए, एग्रीमेंट टू सेल भी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग हो गया, एडवांस पैसे भी दे दिए, कब्ज़ा लिया है या नहीं लिया। और जो बिटवीन द पार्टीज़ देयर वाज सम स्टिपुलेशन, उनके माबैन कुछ तय हुआ। क्या जी? कि जी मिसाल के तौर पर 3 माह बाद या 1 साल बाद एक पार्टी बकिया रकम देगी, और जब पार्टी प्लेंटिफ को आप समझ लें बकिया रकम देगा तो डिफेंडेंट इसको रजिस्ट्री करा देगा। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ के हक में मिल जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। अब डिफेंडेंट नहीं कर रहा, वो इनकार कर देता है एग्रीमेंट टू सेल को मज़ीद एग्जीक्यूशन से। मज़ीद एग्जीक्यूशन क्या हो सकती है? रजिस्ट्री की शक्ल में। तो एग्रीव्ड पर्सन आ जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अब जैसे आप लोगों को बताया कि प्लेंट दायर होगी, अब प्लेंट के साथ इंतहाई अहम चीज़ है काज ऑफ एक्शन। इसको जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने क्वेश्चन तैयार करने हैं, पर्टिकुलरली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान का सिविल सिस्टम की ये फाउंडेशन है, जैसे आप लोग इसमें इस स्लाइड में पढ़ ही लेंगे। अब देखें ना, इसको हम देखते हैं काज ऑफ एक्शन, मीनिंग एंड कनोटेशन। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ काज ऑफ एक्शन। Cause of action was the foundation of a lawsuit and was the totality of material facts which it was necessary for the plaintiff to allege and prove in order to succeed। अब ये बनाए दावा क्या है? अंग्रेज़ी ज़बान में जिसे हम काज ऑफ एक्शन कहते हैं, उर्दू ज़बान में हम बनाए दावा कहते हैं कि क्या ये कानूनन आपका हक है कि आप अदालत में आएँ? क्या कानूनन आप अदालत में साबित कर सकेंगे कि किसी शख्स ने आपको सिविल राइट से महरूम कर दिया है? इंतहाई बुनियादी चीज़ है। जैसे डेफिनेशन पोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि प्लेंट की डेफिनेशन आप देख लें, इसकी अहमियत देख लें, और नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी देखते हैं कि प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए। इसी तरह काज ऑफ एक्शन की केस लॉ डेफिनेशन भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें, देख लें, कंसेप्ट बना लें, या आप लोगों के फॉरएवर काम आ जाएगा। अब ये जैसे सिविल लॉ का हमारे 2 पेपर हैं, सिविल जज के और एडीए के पेपर होते हैं, और डिफरेंट जो हमारे लॉ एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये अक्सर चीज़ें पूछी जाती हैं, प्लेंट, इसका तरीक़ाकार, काज ऑफ एक्शन वगैरह। अब ये देखें एलिमेंट्स ऑफ a cause of action work। फर्स्ट द ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओइंग बाई वन पर्सन टू अनदर। अब देखें ना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब एग्रीमेंट टू सेल था, उसमें दोनों अशखास ने विद फ्री कंसेंट एक तय किया कि जी हमारा मुआहदा बैय है, दूसरी पार्टी इसे रिजाइल कर गई। अब ये देखें ना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी पैदा हो गई। अब इसका सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है?
सेकेंड, द डैमेज रिजल्टिंग टू द अदर फ्राम द ब्रीच। अब ये नुकसान हो गया ना, आप इसमें हम इंशाल्लाह ताला कानून शहादत को भी इनके साथ ही पढ़ेंगे और आज मैं आप लोगों को रेलिवेंट लाज भी बता रहा हूँ। अब उसकी ये ब्रीच क्या हुई? Cause of action has been held from the earliest time to include every fact which is material to be proved to entitle the plaintiff to succeed. Cause of action एक ऐसा सच है, फैक्ट है, जो मुद्दई साबित करेगा अदालत में कि क्या वाकई उसे हक से महरूम कर दिया गया है, क्या लीगली वेदर ही इज़ कम्पिटेंट टू फाइल आ सिविल सूट। अब डिफेंडेंट उसके हक से तजावुज़ कर रहा है, ये है इसकी बेसिक चीज़। अब इसका काज ऑफ एक्शन का टेस्ट क्या है? वाज दैट इफ़ व्हाट द प्लेंटिफ स्टेट्स वाज टेकन टू बी करेक्ट, डिड इट एंटाइटल हिम टू अ रिलीफ or not in law. Cause of action meant the infringement of the right which furnished occasion for the action and must be antecedent to the institution of a suit, and on the basis of it the suit must be filed. Respected students, these are the basic fundamental concepts of the civil law. If you want success, if you want competency in the field of civil law, you must know the basic facts of civil law. What are the basic facts? Basic knowledge of civil justice system of Pakistan. As I told earlier, plaintiff, right, civil right, cause of action, the essential ingredients of cause of action. Mostly, if we examine and analyze the judgments of the Honorable Superior Courts of Pakistan, like Honorable High Court and Supreme Court, mostly 80 to 90% cases in which what discussion has been made by the Honorable Superior Courts of Pakistan. Plaint is rejected, plaint is returned, case is dismissed. For what reason? But most of the grounds that are involved in these cases may be the lack of jurisdiction, lack of cause of action. These are the basic things that you must keep in mind while preparing the civil law papers. Now we discuss the another case law 2013 MLD pages 415 cause of action in civil suit would refer to averments or allegations leveled by one party and denied by other party. Simply allegations, facts that had been narrated by the plaintiff in his suit against the defendant, wherein the plaintiff is alleging that defendant is denying from his civil right. You may also see different definitions of cause of action and the different grounds and the different sections of the Code of Civil Procedure in these different slides. Now lastly, we see the particulars to be contained in plaint in a case law that is titled as 2016 CLC pages 1316. Main particulars, essential things that are very necessary for the plaintiff while drafting a plaint. The name of the court in which suit is brought, generally the name of the court at the district headquarters, mostly in Punjab, may be the senior civil judge, civil division, and at tehsil level, civil judge first, civil judge who is the most senior civil judge in that tehsil, and at B, the name, description, and place of residence of the plaintiff.
Third, the name, description, and place of residence of the defendant. 4. Where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind. Inshallah, in next lectures, we will also discuss Order 32 that purely relates to the minor, guardian ad litem, etc. At number E, the facts constituting the cause of action. It is a very essential and important point. Facts that create the cause of action and when it arose. At F, the facts showing that the court has jurisdiction. G, the relief which the plaintiff claims. H, where the plaintiff has allowed a set off or relinquish a portion of the claim. In next lectures, when we will study Order 2, Rule 2, this H point we will also discuss. And lastly at I series, a statement of the value of the subject matter of the suit. In next lecture, I will also explain these things as well as the jurisdiction point of view and the other requirement of law that has been given in different statutes of civil nature, that are the Registration Act, Limitation Act, Court Fees Act, etc. And now the last slide of today's lecture is relevant laws. Code of Civil Procedure 1908, Specific Relief Act 1877, Contract Act 1872, and Kanun-e-Shahadat Order 1984, etc. How civil law is regulated. How Code of Civil Procedure is adopted by the Civil Code. In what form? There are different civil statutes, civil laws in Pakistan. As earlier I said that Code of Civil Procedure only explains the procedure, the method of availing the remedy. But what is the name of that law that is giving you the relief remedy? Most probably and mostly very important law, that is Specific Relief Act. A suit for possession, a suit for specific performance of an agreement to sell, a suit for declaration. Different suits, their definition and requirement has been given in the Specific Relief Act. An aggrieved person basically files a civil suit under the Specific Relief Act, but the procedure is adopted as a Code of Civil Procedure. Contract Act also comes in support for the adjudication of a civil suit. When there is an agreement to sell, its requirement forms when an agreement to sell is enforceable or not. The basic principles has been given in the Contract Act as well as Specific Relief Act. What are the requirements to make a contract? Its requirement has been given in the Contract Act. Now, at number 4, you may see Kanun-e-Shahadat Order 1984. It is a very important law that also regulates the method of civil procedure CPC. In which shape? It explains the method of evidence, their production, cross-examination, and the evidentiary value of different documents, admissibility, relevancy of those documents. There are also other many things that are discussed under the Kanun-e-Shahadat Order 1984. In the next lecture, inshallah, we
will discuss the relevancy of different laws that are civil by nature, and further the requirement of the plaint, and if the plaint is not framed according to law, what are its consequences. आज का लेक्चर आज इतना ही काफ़ी है। काइंडली इसको ज़रा समझ लें, अगर ब्रीफ समरी हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।